मून पे लैंड हो जाए। India's historic movement has everyone riveted. Children across schools are aiming for the moon. Others are dressing up like Chandrama. हम लोग इसरो के नए रॉकेट क्राफ्ट चंद्रयान 3 को प्रेयर्स देने आए हैं कि वो सक्सेसफुली मून के ऊपर लैंड कर जाए। Chandrayaan 3 has ignited Indian minds like never before. From art to song and dance, all are moonstruck. Chandrayaan 3 has ignited Indian minds like never before. From art to song and dance. A never before seen celestial collision of science and spirit. With a million prayers and grit, the moon is surely ours. With Akshita Nandagopal in Bengaluru, Bureau Report, India Today. Welcome to the India Today Science Centre. We're now just about 2 hours from India's tryst with moon history. The lunar surface is just about 20 kilometers from the Vikram lander. 6:04 p.m. is the landing. 5:44 is when the automatic landing system kicks in, and we'll be bringing all of that to you live right here, the only channel that's continuing to stay live till the lander touches down. I'm Shiv. Thank you so much for being with me. I'm going to take you across to all our reporters at the ISRO headquarters in just a moment. First, as always, the headlines. Chandrayaan all set for its automated landing system to kick in shortly. ISRO lander to reach designated point at 5:44 p.m. ISRO releases first images of the command center where everything is being controlled. Final phase of the Chandrayaan 3 landing begins at 5:45 p.m., 25 kilometers from the moon surface. Tricky maneuvers for the next 15 minutes. We decode the 15 minutes of terror. A billion cheers as India is set to create history with this moon landing. Pujas, namaz, prayers across India for Chandrayaan 3's success. Union ministers also out there praying for a successful landing. As India eyes moon glory, Congress peddles fake news. Digvijay Singh talks about scientists at ISRO not being paid salaries. This was something that was fact-checked just a week ago. समाचार पत्रों में खबरें आ रही कि जिन वैज्ञानिकों ने सब काम किया है उनकी 17 महीने से वेतन उनको नहीं मिल पाया है। इस बात का भी ध्यान प्रधानमंत्री को देना चाहिए। And it isn't just Chandrayaan that's making news today. All eyes on our chess prodigy, Pragyananda, as he takes on world number 1. And only 2 hours to go now for India's moon landing. The Vikram lander is locked and loaded. Everything is going perfectly according to plan. 2 minutes, 2 hours and 4 minutes to go for that final touchdown on the moon's surface. 5:44 p.m. is when the auto landing system will engage.
bringing the Vikram lander to its final approach configuration for a soft touchdown on the surface of the moon. 2 hours to go for history to be created for India and for the world. It will be the first landing on the south pole of the moon, which has not been explored by any mission so far. Akshita Nandagopal is at the ISRO headquarters in Bengaluru, where the command center is busy with activity with only 2 hours to go. This is a nail-biting moment that cannot be described. But all things, Akshita, are smooth sailing, everything going according to plan before those 15 minutes of terror. And even in that case, the scientists, with all the lessons from the last mission in 2019, believe that they have a much more robust, prepared and ready, lander for this mission. Very true, Shiv. I'd say less than 2 hours, because if 5:20 is when the live streaming will begin. And here, as we stand in the ISRO headquarters, behind me is where we'll be getting you those images of the live streaming as it happens, because that's go time. That's the time when ISRO scientists then will be ensuring they do all their checks and balances to ensure we're fully ready for that soft landing. The 15 minutes of terror that you're referring to, Shiv, in all likelihood, from what I've seen really, and the pamphlets that ISRO has given us, looks like it's going to be 19 minutes of terror, starting at 5:45 or so, going up till 6:04 p.m. And in those 19 minutes, that's the time when ISRO scientists essentially will just watch what's happening, like us. Of course, they'll be tracking very closely, understanding a lot more of what we're seeing on our screens and the movement of the lander itself. But having said that, from 5:20, they'll be busy going ahead and giving commands to the lander. 5:45 onwards, they have absolutely nothing to do, because everything is completely automated. It's a system very clearly that's set in place, what they refer to as ALS, which is the automated landing sequence that's already been put in place. The commands have been given. Based on that, the commands that the scientists, that Team Chandrayaan has sent across right now to lander Vikram includes when the 4 engines should come on, when 2 of the thruster engines will be switched off, when 2 will be on. All of that with precise timing down to the second has already been sent across as a command to lander Vikram. So it's just about following a string of commands that ISRO has given. It's just about ensuring that their design, their tech, that they've been working on for the last many years so very hard and toiled over, all of that comes into place, fits in like a perfect puzzle. In which case, 6:04 p.m. from here, I'll be showing you all the celebrations that break out. Incredible. I mean, the entire energy, the entire atmosphere there, it's not going to be easy to describe it in words. But Akshita, I've been where you're standing in 2019, so I know exactly how you're feeling right now. Many of those scientists are the same ones we saw that time as well. The science is locked and loaded. We've got that down. The spirituality and the celebrations and the good wishes of the public is as important as well, and ISRO knows it. Going across to the Nehru Planetarium in Delhi, where India Today is Nabila Jamal, has been speaking to the people there. Celebrations and energy organized everywhere. Nabila, what's the atmosphere there like at the Nehru Planetarium? Right. Shiv, if you can hear me, I'm right now at the Nehru Planetarium in Delhi, and of course the mood right now is upbeat. Unfortunately, I had a big bunch of people here who rushed in to watch a show. So right at the time when the Chandrayaan is landing, it appears that Nehru Planetarium are selling out back-to-back shows on the planet and an understanding of the moon. In just about a few hours, as the Chandrayaan lands, we see that people across Delhi have landed at the Nehru Planetarium, hoping to see some kind of telecast. If I can actually ask my camera to pan here. These are, of course, all the media channels here. Waiting for that live telecast for ISRO to show relay visuals. But that's a screen there that you see where the Chandrayaan 3's movement is tracked. That's precisely the screen that is being tracked here by people who are coming into the planetarium to get a close look of the movement of Vikram lander and its rover Pragyan. So the mood is upbeat. People are here, but they're all inside watching a show on the celestial, on the galaxy itself. And of course, the Chandrayaan's relevance is high. It has been already spoken to a bunch of the people who have landed here, and they are waiting and eager to watch
watch this whole process, but possibly at 5 o'clock we'd see them flocking in larger numbers. For now, there's a show right here. The doors are closed. The show is happening right inside where people are going to watch the galaxy and get an understanding of it. But we can't wait, Shiv, if this is successful and goes as per plan, India to become the 4th country in the world to accomplish this mission. And I think this is where a billion hopes are riding on the Chandrayaan 3. And we are super sure that ISRO has worked out every margin of error. It will be landing on point as planned. Nabila, thanks for that. We'll keep coming back to you. The people at the planetarium have gone inside. There's a showing of a film right before that big landing, but only 2 hours to go. Less than 2 hours to go. A big crowd and media there, and there are screens behind Nabila where they're going to be showing live images from the ISRO, I suspect. So those images that Akshita brings to us here live on India Today are going to be shown all across the country. Sagai Raj is also with us. He's live from inside the ISRO center where those images are going to be coming online in just a short while from now. Sagai, it's 4:07 now. In just about 1 hour and 13 minutes, the live data will start to come in from the Vikram lander, and the screen behind you will start to beam all that information. Am I right? Got a correction, and remember that it is going to be very crucial for the entire ISRO, those 19 minutes, because that is the time where ISRO will try to land the lander on the surface of the moon. Remember, there is a speciality when you compare to Chandrayaan 2 and Chandrayaan 3. This time, If you've been trying to use YouTube Shorts, but all of your views are falling flat, you have to check this out. And get yourself one of these YouTube play buttons. ସବୁବେଳେ ଜିତନ୍ତି ବିକ୍ରମ ସାରାଭାଇ ବି ଜିତିଥିଲେ ତେଣୁ ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି Okay, guys, target vault's ahead. He's confirmed inside. This is impossible. Get the key to her financials and personal data. Strike team, go! Why is this key so hard to get? Your privacy secured. We don't waste no time, we gon' make it shine. Don't you feel this vibe? We're a different kind, we're a different kind. 우리 미운새 제가 뜨고 지는 건 상관없이 또 모든 게 별 생각 없이 재미있으면 너를게 Just do it 걱정 따윈 no way Oh we'll dancing all night long Up all day 내일이 없을 것 같이 Up all day 아니 넌 뭔데 정해 괜찮아 가던 길 가면 돼요 We'll be alright we'll be alright 건 잡아 the bag ଯେ ଆଜି ବିକ୍ରମ ଲ୍ୟାଣ୍ଡର ସେଠାରେ ପହଞ୍ଚିବ ଏବଂ ଭାରତର ଜୟଗାନ କରିବ ତେବେ ଆପଣଙ୍କୁ କଥାଟି ପଚାରିଲେ ମୁଁ ଦେଖିପାରୁଛି ଆପଣଙ୍କର ଏଠି ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ମହୋତ୍ସବ ପାଳନ କରୁଛନ୍ତି ମୁଁ ଭାବୁଛି ଏ ମହୋତ୍ସବ ସାରା ଭାରତରେ ମନାଯାଉଛି ସବୁଠାରେ ଆପଣ ଯାହା କହିଲେ ମନ୍ଦିର ଏବଂ ମସଜିଦ୍ ସବୁଠାରେ ମହୋତ୍ସବର ପାଳନ କରାଯାଉଛି ମୁଁ କହିବି ଯେ ଏ ହେଉଛି ଭାରତ ମହୋତ୍ସବ ଯେଉଁଟାକି ସାରା ବିଶ୍ୱ
বুঝি তোর কপালে बेसी पूरा पृथ्वी आमको बेसी गौरवान्वित लगे कहीं आम ही गोटे चतुर्थ देश थी जे चंद्रयान सहित मून सॉफ्ट लैंडिंग करब आम देश बेसी गर्वर कथा थी आम मैंने विक्रम लैंडर जो अच्छे आम मैंने चंद्र अवतरण करूँ से बेसी गर्व कथा यहाँ आम जो छात्री अच्छा 6टा समय किभଳି देखियो घरे देखियो ना कोठी देखियो का सहित देखियो से समय मुहूर्त को आम 140 भारत 140 कोटी भारतीय बहुत उत्साहित अच्छु निहाती आम सेलिब्रेट करूँ आहाती टीवी रे आपको देखी आज जो इंडिया थर्ड मिशन अच्छे चंद्रयान 3 से आज चंद्र पृष्ठ 6टा 4 मिनिट जाकि अवतरण करने जाऊँगी तो आम आप बहुत उत्साहित अच्छु आम मुझे प्रार्थना करी जे भारत निहाती दिने ना दिने शक्तिशाली देश हम आउ रशिया भी तार गोटे पठेला चंद्रयान को मिशन बट सी असफल होती भारत भी असफल होती किंतु सी असफलता को पछरे पकड़ सफलतार सीढ़ी को चढ़ा जाऊँगी धन्यवाद आपण शुणुले छात्र छात्री समस्त मन में उत्कंठा रही से समय को अपेक्षा करते सॉफ्ट लैंडिंग कर चंद्रयान 3 से टीवी रे देखिए और जो भारत को नहीं निजे निजे गर्वित मन कर उदीप निश्चित भाव में 6टा 4 चंद्रपृष्ठ को छुईब लैंडर एवं सॉफ्ट लैंडिंग को मध्य समस्त अपेक्षा रही पिलामानक भितर बेस उत्साह और उत्कंठा भी देखा मिली धन्यवाद आम प्रतिनिधि जितेंद्र बेहरा आम सह जोड़ी होते और सविशेष सूचना देते तो कोईडर जोड़ी रिपोर्टर सुनील पन्ना सुनील आप जो अच्छा से उत्साह रही चंद्रयान आज सॉफ्ट लैंडिंग को नहीं चंद्रयान 3 ये सफलता को नहीं केते उत्साह रही देखो प्रदीप जदि कहबा आ किछि घंटार समय जो बाकी रही जो दिव्य मुहूर्त जो ऐतिहासिक समय 6टा 4 को समस्त अपेक्षा करिसेंती चंद्रयान 3 सफल भाव में जे कि जो रही अवतरण करिबो एवं शुभ कलश मध्य बसी सारी ये होची जे कि तेरसा अंचल 0 पॉइंट जो नीलकंठेश्वर मंदिर अच्छी एठारे महिला माने जे कि शुभ कलश बसई सारी शुभ मनासी सारी किभଳି भाव में चंद्रयान 3 जो कि सफल भाव में अवतरण कर महिला मैंने प्रतिक्रिया नवा कौन कहे जो मुहूर्त को अपेक्षा थी मात्र किसी घंटा रही भारत वर्ष एक खुशी और गौरवर कथा सका आज शुभ कलश बस पूजा अर्चना कर आज तो सब आपको स्पेस में ही करना है ओके तो देखिए उसमें क्या होता है कि ये मान लो ये अर्थ है और हमने अपना जो चंद्रयान है उसको एक पर्टिकुलर एक ऑर्बिट में छोड़ते हैं। वो ऑर्बिट जो रहती है वो रहती है एक्सपेक्टेड ऑर्बिट थी कि 170 किलोमीटर होगा सबसे पास का डिस्टेंस अर्थ से और 36,500 किलोमीटर सबसे दूर जाएगा। तो एक ऐसी बड़ी अंडाकार ऑर्बिट होती है। तो उस ऑर्बिट में हमने इसको छोड़ा जिसको हम कहते हैं पार्किंग ऑर्बिट। फिर हमने थ्रस्टर्स फायर करे थे हमारे प्रोपल्शन मॉड्यूल के और उसको बढ़ाते गए।
फिर वो आते थे, ट्वीट्स आते थे इसरो के कि सक्सेसफुल मनूवरिंग, और वो मनूवरिंग हमने करी थी और फिर हमने उसको ट्रांस लूनर ट्रेजेक्ट्री पे भेजा था। ये हुआ था 1 अगस्त को रात को एक ट्वीट आया था इसरो का कि अब हम ट्रांस लूनर ट्रांसफर चालू हो गया है, और फिर हम 5 अगस्त के आसपास कैप्चर हुए थे चांद में। फिर वो कैप्चर जब हुए थे तो हम उस सिचुएशन में यहां पहुंचे थे, जो कैप्चर हुआ, ये जो ग्रीन हमें स्ट्राइप दिख रही, कैप्चर हुआ। तो जब हम चांद में कैप्चर हुए तो वहां पर इस सिचुएशन को मैं को इसको थोड़ा उठाना ही था। यहां पे जैसे नोजल दिख रहे हैं ना, ऐसा है कि यहां पे नोजल होगा। तो ये जब पहले मूव कर रहा है, व्हेन इट इज मूविंग अवे फ्रॉम द अर्थ, तो थ्रस्टर्स पीछे होते हैं, मतलब ये पार्ट इसके ऊपर होता है ना। द सिस्टम इज लाइक दिस, असेंबली इसके ऊपर होती है यूं, अच्छा ठीक है। तो ये इसके ऊपर होती है, और जो थ्रस्टर्स थे वो फायर करके हम ट्रेजेक्ट्री को बढ़ा रहे थे जब अर्थ के चारों तरफ थे। फिर इसको घुमाया गया, इसको पूरे सिस्टम को घुमा दिया गया। तो ये अभी यूं जा रहा था, इसको पूरा घुमा दिया गया, 180 डिग्री फ्लिप करा गया। और फिर थ्रस्टर्स को जब फायर किया तो हमने स्पीड को कम किया यहां पे, जिससे कि चांद में अपनी ग्रेविटी में कैप्चर कर ले। और वहां से जो ऑर्बिट मिली थी वो सबसे बड़े वाली मिली थी, सबसे बड़े वाली ऑर्बिट। अब इस ऑर्बिट को जब हमको छोटा करना है तो हम यहां पर फायरिंग करते थे, इसकी मोटर फायरिंग कहते हैं इसको। तो मोटर फायरिंग करते थे, इंजन फायरिंग करते थे, और ग्रेजुअली उसको हम कम करते गए। ये जितने भी मनूवर्स थे कम करते गए। इसरो ने पहले प्लान किया था कि हम 100 बाय 100 में जाएंगे। आपने देखा होगा सब जगह लिखा हुआ था 100 किलोमीटर बाय 100 किलोमीटर, 100 किलोमीटर बाय 100, सब जगह यही बात चल रही थी। लेकिन हम गए किस में थे, मतलब अगर कुछ ध्यान हो आपको, कौन सी ऑर्बिट में पहुंचे थे अपन फाइनली? जब इसरो ने ट्वीट किया था वो था 153 एंड 164 किलोमीटर। एग्जैक्ट 100 बाय 100 में हम नहीं गए थे, ठीक है। 16 अगस्त की बात है। उसके बाद सेपरेशन हुआ। सेपरेशन होने के बाद विक्रम ने इसको छोड़ दिया था, प्रोपल्शन मॉड्यूल को छोड़ दिया था, और विक्रम अलग अपनी जर्नी पे चल गया था। फिर 2 डीबूस्ट हुए थे, 18 तारीख 20 तारीख। 18 तारीख और 20 तारीख को जो डीबूस्ट हुए थे, तो मान लो ये विक्रम है, तो अगर मैं इस विक्रम को यूं लेकर जा रहा हूं और इसके थ्रस्टर्स पीछे की साइड हैं, ये 4 जो नोजल दिख रहे हैं ये पीछे की साइड है, और अगर मैं इनको फायर करूंगा तो ये स्पीड अप होगा, ठीक है। तो अगर देखा हो तो जो इसरो की ट्वीट्स आती थी तो कभी भी उनने ऐसा नहीं दिखाया, उनने एक एंगल पे दिखाया कि ये सब कुछ एक एंगल पे उनने दिखाया कि पर्टिकुलर, क्यों थ्रस्टर्स को फायर करके इसको पूरा 180 डिग्री घुमाया गया है, अच्छा पूरा, जिससे कि जो थ्रस्टर्स हैं वो सामने की साइड आ जाए। अब थ्रस्टर्स अगर सामने की साइड आ जाएंगे तो जिस तरीके से हम इसको कंट्रोल कर रहे थे वैसे हम इसको कंट्रोल करेंगे। और तब हुई थी डीबूस्टिंग। तो डीबूस्टिंग में थ्रस्टर्स, अब क्योंकि इसको स्लो करना है, स्लो क्यों करना है? क्योंकि जब ऑर्बिट से हम किसी भी चीज को नीचे लाना चाहते हैं तो उसकी स्पीड कम करो। जब हमें ऑर्बिट से नीचे लाना था, इन ऑर्बिट्स को भी जब नीचे लाना था, तो हम स्पीड कम कर आरंभ होइछि गोटे छोट कमर्शियल ब्रेक पाए मत निर्देश ये इस तरीके से ये ऐसे एंटर करेगा, इट विल एंटर दिस वे।
हॉलीडे प्लानिंग पार्ट 2। इस बार क्या ड्रामा होगा? तू सही था छोटे, पूल चाहिए। भैया